Hello, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics A levels. As you know that we are studying chapter of gravitational field, in this class we will discuss a very important topic of satellites. Now, what is satellite? Satellites are the objects which are constantly revolving Earth in their orbits, right? Now, there are two types of satellites, natural satellites and man-made satellites, which are called artificial satellites, right? Now, Moon is a natural satellite of Earth because it is constantly revolving around Earth. All the planets of solar system are natural satellites of Sun because they are constantly revolving, right? Now, what is need of these artificial satellites? Which we require artificial satellites for the purpose of spying, right? Weather forecasting, navigation such as GPS जो हम Google Maps use करते हैं. So these satellites are constantly revolving in their orbits, right? In the screen, you can see International Space Station. It's a huge satellite. In fact, it's the most expensive man-made object ever, right? Its mass is 450,000 kg and its cost is 150 billion US dollar. अब आप imagine करें कि इतनी मैसिव सैटेलाइट एक कांस्टेंट एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर जो है अर्थ को कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप ऑफ अर्थ एंड दिस इज वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी अमेजिंग, राइट? सो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट? So time period of satellite is a time taken by a satellite to complete one revolution, right? So we will write time period of satellite. Time period of satellite is time period of satellite is time taken by satellite, time taken by a satellite to complete one revolution. To complete one revolution, right? So we know that satellites are constantly revolving Earth. So time period of satellite is time taken by that satellite to complete one revolution, right? अच्छा, अब Earth भी एक natural satellite है और Earth अपना एक राउंड ट्रिप एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करती है 365 डेज, राइट? 365 डेज, राइट? सिमिलरली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, इट्स टाइम पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली 92 मिनट्स, right? So here's the situation in front of you. You can see the central entity, which is Earth. And let's assume that the mass of Earth is capital M, right? Here you have a satellite. और सैटेलाइट का मास हम अज्यूम कर रहे हैं स्मॉल n. Mass of Earth is capital M and mass of satellite is small n, right? This is the center of Earth. And the distance from the center of Earth to the satellite is distance r, and this is also called orbital radius. ठीक है, जो इसका orbit है, जो इसकी path है, उसका radius. So keep in mind that this r is orbital radius. Orbital radius. So satellite is moving in this path. This is the path of satellite, right? So what is the motion of satellite? Motion of satellite is circular motion, right? So इसका मतलब ये है कि इस सैटेलाइट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही, right? Now what were the two formulas of centripetal force? Centripetal force is equal to mv square over r, and the other formula was mr omega square. We discussed this in a lot of detail in the chapter of circular motion. So we have to find out time period of satellite. In fact, we will do the derivation. तो आप लोग लिखेंगे derivation. In this derivation, we have to find an expression for time period of satellite. So what is time period? Once again, time period is the time taken by satellite to complete one revolution. So let's do the derivation. आप मुझे ये बताइए कि सैटेलाइट के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? There is a gravitational force between Earth and satellite, and the direction of gravitational force is toward the center of Earth, right? So this is the direction of gravitational force. Now this is the net force which is pointing toward the center of Earth. So gravitational force is in fact the centripetal force. So we will write
gravitational force is equal to centripetal force. Right? The expression of gravitational force is G m over r square, where G is gravitational constant, capital M is mass of Earth, small m is mass of satellite, and r square is orbital radius. Right? This is equal to m r omega square. Keep in mind, because we have to find out the value of time period, तो मैंने यहाँ पर centripetal force का वो वाला formula use किया है जिसमें omega आ रहा है, which can be further replaced by 2 pi over t. So that's how we will introduce time period, right? So further on, mass will be cancelled out with mass, right? इसका मतलब ये है that time period of satellite does not depend upon the mass of satellite. Further, we will write Gm over r square is equal to r, और ओमेगा का यहां पर एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं 2 पाई ओवर कैपिटल टी होल स्क्वायर. राइट? ओके, वी हैव टू मेक टाइम पीरियड सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. सो वी विल फर्दर राइट gm ओवर r क्यूब. वाई r क्यूब? बिकॉज दूसरी साइड पर जो r है न्यूमिनेटर में, इस साइड पर आकर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट? gm over r cube is equal to, square open करें, this will be 4 pi square divided by t square. Right? Now t square is equal to 4 pi square over gm r cube. Right? Now this 4 is constant, pi square is constant, G is gravitational constant, and capital M is mass of the central entity, which is Earth in this case. Right? This whole thing is constant, so we can easily say that T square is proportional to R cube. T square is proportional to R cube. Right? इसका मतलब ये है, जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा है उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा. A satellite which is further away from the center will have greater time period. Right? So this is also referred as Kepler's third law. Kepler's third law exactly syllabus का part तो नहीं है, लेकिन you should know that this law is Kepler's law. Right? So for example, solar system में, which is the nearest planet to sun? The nearest planet is Mercury. Mercury has minimum time period. And the farthest planet is Pluto. Pluto take hundreds of years to complete one revolution, whereas Mercury completes its one revolution just in few days, right? So, जो satellite, may it be a natural satellite, may it be artificial satellite, जो center से जितना away होगी उसका time period उतना ही ज़्यादा होगा, right? So, we have to consider this proportionality, and this will help us solving a lot of questions, right? Now, we have to find out the expression of time period. You will write time period of satellite is equal to 4 pi square over gm multiplied by r cube whole under root. Right? You have to memorize this expression of time period of satellite. ठीक है? अगर आप इस एक्सप्रेशन को मेमोराइज नहीं कर सकते तो आपको डिराइव करना आना चाहिए. आप ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करेंगे. ठीक है? और जल्दी से डेरिवेशन करके टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे. राइट? तो बच्चों, जो सैटेलाइट जितनी दूर होगी उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा. सो यूजिंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी वी विल फॉर्म एन इक्वेशन t1 स्क्वायर divided by t2 square is equal to r1 cube divided by r2 cube. Right? So इस इक्वेशन अप्लाई करने के लिए आप एक इंस्ट्रक्शन जरूर याद रखिएगा. जो सैटेलाइट या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स की सेंट्रल एंटिटी सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्थ और जुपिटर पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. वाई? बिकॉज अर्थ और जुपिटर दोनों की सेंट्रल एंटिटी सेम है, विच इज सन. आप अर्थ पे और मून पे ये वाली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज मून इज रिवॉल्विंग अर्थ and Earth is revolving Sun. दोनों की central entity is different. So later on we will be doing some questions using this equation. Right? अच्छा, what if
he is asking to find out the expression of radius of a satellite, orbital radius of satellite. तो फिर ऑर्बिटल रेडियस में आप यहां तक तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला आप आर को बना देंगे, आर इज इक्वल टू GMT² डिवाइडेड बाय 4π² होल क्यूब रूट. ठीक है, तो इसका मतलब ये है ऑर्बिटल रेडियस के लिए भी आपने ये एक्सप्रेशन सेलेक्ट करना है, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और वहां से आपने आर को, ऑर्बिटल रेडियस को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. नाउ there are different types of satellite. There are polar satellites, there are geostationary satellites, but the one which is the part of our syllabus is geostationary satellite. So let's discuss geostationary satellites. Now what is geostationary satellite? Geo means earth and stationary means rest, right? So these are the satellites which are at rest with respect to earth. For example, this satellite is right above the plane of equator, right? जब अर्थ रोटेट करती है तो जिस कंट्री के ऊपर ये सैटेलाइट होती है उसके टॉप पर ही रहती है. इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट का रेवोल्यूशनरी मोशन अर्थ के रोटेशनल मोशन के साथ एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज हो गया है, राइट? द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स. तो ये सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी एग्जैक्टली 24 आवर्स, राइट? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. दिस इज द सेंट्रल रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ, राइट? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो याद रखिएगा इस सैटेलाइट का मोशन भी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होता है. Geostationary satellite also revolves from west to east, right? The time period of rotation of Earth is 24 hours. So the time period of revolution of this geostationary satellite is also 24 hours, right? So let's suppose there are some countries which lie on equator. For example, Kenya है, Indonesia है, ब्राजील का कुछ पार्ट है. तो ये वाली सैटेलाइट अगर ब्राजील की सैटेलाइट है तो इसका मोशन ब्राजील के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ब्राजील एंड दिस टिप ऑफ द पेन इज द सैटेलाइट. जब अर्थ टर्न करेगी तो सैटेलाइट इसके साथ रिवॉल्व करेगी सो दैट दिस सैटेलाइट इज राइट अबव दिस कंट्री थ्रू आउट. याद रखिएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है दैट इज एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर ऑफ अर्थ. नाउ व्हाट आर द 3 कंडीशंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? यू विल राइट conditions of geostationary satellite. Conditions of geostationary satellite, right? So the first condition is time period of satellite is time period of revolution. Time period of revolution of satellite is equal to the period of rotation of Earth. The period of rotation of Earth, and that is exactly 24 hours, right? अब इसका मोशन भी मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन भी सिंक्ड है. दे बोथ रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट? सो द सेकंड कंडीशन इज डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्शन ऑफ revolution of satellite is same as direction of rotation of Earth. Direction of rotation of Earth, that is from west to east, right? And there's a third condition, and this is the satellite, the geostationary satellite is present exactly above
the plane of equator. The plane of equator. Right? As you can see in the diagram, this is the equator. Right? So this satellite is present exactly above the plane of equator. Right? Now this is the center of Earth. Right? And this is orbital radius. This is orbital radius. I am representing orbital radius with symbol R. याद रखिएगा, orbital radius is measured from the center of Earth. In fact, all the radii are measured from the center of Earth. So let's try to find out कि ये satellite का orbital radius क्या है. ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस कराता हूँ कि अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला याद नहीं है, आप जल्दी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आप लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एम आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर is equal to gmm over r square, right? Small m will be cancelled out with small m. Let's make this time period subject of the formula. So time period of satellite is 4 pi square r cube over gm whole under root. ठीक है, एग्जाम में भी आपको इतना ही टाइम लगेगा, आप इसका टाइम पीरियड यहां से फाइंड आउट कर सकते, राइट? बट हियर आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट. तो मुझे किस चीज को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है? आई नीड टू मेक आर सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. सो ऑर्बिटल रेडियस आर इज इक्वल टू gmt square over 4 pi square whole cube root, where g is gravitational constant, m is mass of Earth, t is the time period of geostationary satellite, which is exactly equal to the time period of rotation of Earth, which is 24 hours, divided by a constant of 4 pi square, right? So let's find out the value of orbital radius of geostationary satellite. Keep in mind that mass of Earth is approximately 6 into 10 raised to power 24 kg, and टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 24 आवर्स. ठीक है, लेकिन हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करना है. सो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ जी, विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर -11. मास ऑफ अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर 24. टाइम पीरियड इज 24. आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड्स में, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3600 divided by 4 pi square whole cube root, right? So let's find out the value of r using calculator. So this is 6.67 multiplied by 10 raised to power -11 multiplied by 6 multiplied by 10 raised to power 24 multiplied by 24 multiplied by 3600 with a square on it, divided by 4 pi square whole cube root. This value is 4.23 into 10 raised to power 7 meters. Right? Let's convert this distance to meters. Right? This r is equal to 4.23 into 10 raised to power 7 divided by 1000. Right? This value is approximately 42,300 kilometers. Right? 42,300 kilometers. इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्बिट में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट प्रेजेंट है, उस ऑर्बिट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 42,300 kilometers, राइट? सो व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस सैटेलाइट अबव माय हेड? फॉर एग्जांपल, आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द अर्थ और मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे हेड से इस सैटेलाइट की कितनी हाइट है. सो आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो आपको इस ऑर्बिटल रेडियस में से क्या चीज माइनस करनी पड़ेगी? द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, सो इसमें से हम
रेडियस ऑफ अर्थ माइनस करेंगे, सो यू विल राइट द डिस्टेंस d above our head is equal to orbital radius minus radius of earth. Keep in mind that the radius of earth is approximately 6400 kilometers, right? So आपने आंसर फाइंड आउट किया है 42,300. इसमें से क्या माइनस करेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 kilometers. So 42,300 minus 6400 is 35,900. 35,900 kilometers, right? So the distance of geostationary satellite above our head is 35,900 kilometers. ठीक है, इतने ज्यादा एल्टीट्यूड पर ये मूव कर रही है. Whereas अभी मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में एक सैटेलाइट बताई थी विच इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स और उसकी हाइट अबाउट द अर्थ इज जस्ट अबाउट 400 किलोमीटर्स, राइट? सो इसका मतलब ये है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज फर्दर अवे फ्रॉम अर्थ. अब यहां पे मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन कराता हूं. लेट्स कंपेयर द टू सैटेलाइट्स. द फर्स्ट सैटेलाइट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विच इज, लेट्स कॉल इट GSS. यू नो कि इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है दैट इज 42,300 किलोमीटर्स. ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना है? इट्स टाइम पीरियड इज 24 hours. देन यू हैव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो ऑर्बिटल रेडियस है हम उसको फाइंड करते हैं और इसका टाइम पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 hours, राइट? याद रहे कि बोथ ऑफ दी सैटेलाइट्स, geostationary satellite and international space station, they are revolving the same central entity which is our earth. ठीक है, so let's find out the orbital radius of international space station. अब यहां पर आपने वो वाली proportionality यूज करनी है that t square is proportional to radius of satellite cube, right? So यहां से आप एक equation form करेंगे which is T1 square divided by T2 square is equal to R1 cube divided by R2 cube. ठीक है, तो हम न्यूमिनेटर में जो डाटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का डाटा और जो डिनोमिनेटर में डाटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का डाटा, राइट? अच्छा, बिकॉज इट्स अ रेशियो तो आपको इसको टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप टाइम को आवर्स में रख सकते हैं. So time period of geostationary satellite is 24 hours. So 24 square divided by 1.5 square is equal to, its orbital radius is 42,300 kilometers, right? So 42,300 cube divided by R2 cube, where R2 we have to find. ठीक है? So let's use the calculator to find out orbital radius of International Space Station, right? So you will write that R cube is equal to 1.5 square multiply by 42,300 cube divided by 24 square. So 1.5 square multiply by 42,300 cube divided by 24 square, right? This value is approximately 2.95 into 10 raised power 11. But we have to find out the value of R. For that, we will take cube root. So cube root of this answer is 6661. 6661 kilometers. Right? So to find out the distance above our head, what we will do is we will subtract the value of ऑर्बिटल रेडियस में से अर्थ के रेडियस को सबट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो द डिस्टेंस अबव अवर हेड इज दिस रेडियस माइनस रेडियस ऑफ अर्थ. सो रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 6661 kilometers and radius of earth is approximately 6400 kilometers. ठीक है, so this distance is approximately equal to 261 kilometers. 261 kilometers. याद रहे कि हमने यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के टाइम पीरियड की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू यूज की है विच इज 90 minutes, but in reality this time period is approximately 93 minutes.
तो ये डिस्टेंस जो है थोड़ा सा ज़्यादा, इट्स अबाउट 400 meters. So what were the conditions of geostationary satellite? Once again, geostationary satellite has a time period which is same as the time period of rotation of Earth, which is 24 hours. Right? The direction of revolution is from west to east, and the geostationary satellite is present exactly above the plane of equator. Right? So in the next upcoming video, we'll be doing some questions related to these satellites. So stay tuned. Thank you.